Let us see. 5th edition. Yashwanth P. Kanetkar. हमें सी 5वें संस्करण यशवंत पी कानेटकर. Getting started. What is C? Getting started with C. The C character set. Constants, variables, and keywords. Types of C constants. Rules for constructing integer constants. Rules for constructing real constants. शुरू करना. सी क्या है? सी से शुरू हो रहा है. सी चरित्र, सेट, स्थिरांक, चर और खोज शब्द. सी कांस्टेंट के प्रकार, इंटीगर कांस्टेंट्स के निर्माण के नियम, वास्तविक स्थिरांक के निर्माण के नियम. Rules for constructing character constants. Types of C variables. Rules for constructing variable name C keywords. The first C program. Compilation and execution. Receiving input. C instructions. Type declaration instruction, arithmetic instruction. Integer and float conversions, hierarchy of operations, associativity of operators. चरित्र, स्थिरांक के निर्माण के नियम. सी चर के प्रकार, परिवर्तनीय नाम. सी कीवर्ड के निर्माण के नियम. द फर्स्ट सी प्रोग्राम, संकलन और निष्पादन, इनपुट प्राप्त करना. सी निर्देश, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन. से एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स के इंटीगर और फ्लोट कन्वर्सेशन, पदानुक्रम. Control instruction in C. Summary. Exercise. सी में नियंत्रण निर्देश, सारांश, व्यायाम. Before we can begin to write serious programs in C, it would be interesting to find out what really is C, how it came into existence, and how does it compare with other computer languages. In this chapter we would briefly outline these issues. बिफोर हम सी में गंभीर कार्यक्रम लिखना शुरू कर सकते हैं, ये पता लगाना दिलचस्प होगा कि वास्तव में सी क्या है, ये अस्तित्व में कैसे आया और अन्य कंप्यूटर भाषाओं के साथ इसकी तुलना कैसे की जाती है. इस अध्याय में हम इन मुद्दों को संक्षेप में बताएंगे. 4 important aspects of any language are the way it stores data, the way it operates upon this data, how it accomplishes input and output, and how it lets you control the sequence of execution of instructions in a program. We would discuss the first 3 of these building blocks in this chapter. किसी भी भाषा के 4 महत्वपूर्ण पहलू डेटा को स्टोर करने के तरीके हैं. जिस तरह से ये डेटा पर काम करता है, ये इनपुट और आउटपुट को कैसे पूरा करता है, और ये आपको अनुक्रम के नियंत्रण को कैसे नियंत्रित करता है. एक कार्यक्रम में निर्देशों का निष्पादन. हम इस अध्याय में इन 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे.